Yes, it is going to be my style for everyone. I'm sure about that. Because everyone is unique, everyone has different style, everyone has different passion, artwork, artwork in any form. And everybody is having different form, different method to do it. And every method is valuable, every personality is respectable. And I truly appreciate this activity. Thank you so much for giving us this opportunity that the beautiful car is here with us and with Mr. Baljinder Singh ji. He is absolutely an art lover, and wonderful activity has been given to our students today. They have used only 3 colors: blue, green and white. And as we can see here, this beautiful earth has been made by students and the team of Mr. Baljinder Singh ji. So we truly appreciate. Once again, thank you so much. We are grateful and keep it up. And because creativity has no limits, and creativity has the no sky of the progress, and it can go to any limit, I'm sure. And many students and many schools will get advantage of this activity and this particularly this beautiful visit. Again, thank you so much. Keep it up. God bless us all. Yes, about Sonu Sood sir, yes. How to start with that? Because during COVID, I came to know about him, about more things. Earlier, I knew about the movies and all. That's it. And then I came to know how kind-hearted is he, as he has done a lot of charity work for people. So again, this is again very new initiative by him. So my all the best wishes are there. Of course, I would love to meet him someday, and as he's really a great source of inspiration always. As whenever I see his posts, social media posts are there. So definitely we want to do some more, definitely, as he's doing, and we learn as we learn every day. And thank you so much, Sonu Sood sir, and for giving us this opportunity. And if everyone can love art, and I'm sure everyone can love the world also. We can love the world if we can love the art, any art. So, and we need to inculcate this love, this compassion in everyone's heart. And art, developing art is the media to inculcate love for everyone, love for humanity, love for animals, love for mankind, love for environment, love for everything. So thank you so much. शेड आपके पास एक भी है ना? आपने 4 कलर में से कोई भी कलर यूज कर सकते हो पूरी शीट पे। हाँ जी, तो अज अपनी और टूर की पहली जर्नी स्टार्ट हुई है। द नॉलेज बस ग्लोबल स्कूल खरड़ सनी क्लिप च पै जाता है। तो चंदा मैम ने और शशि मैम पूरा पैशनेट होकर काम कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मस्ती भी हो रही है। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਆਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਰਟ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, तो ये बना रहे हैं पेंटिंग, क्लास पेंटिंग। शशि मैम लगे हुए हैं बच्चों के साथ, वो खड़ी है अपनी गाड़ी। उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या बन क्या रहा है। As I love art actually, and artwork must be there in every school, and this initiative is really wonderful and can do wonders for rural areas, of course.
वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ताकि आप वहाँ जा रहे हैं और आप उनको मौका देंगे और फिर आपका जो प्लान है ऑनलाइन करने का, दैट विल बी रियली मार्वलस एंड माय बेस्ट विशेस आर देयर फॉर यू। क्योंकि आर्ट वर्क जो है वो सिर्फ आर्ट वर्क दिखाने के लिए नहीं है, आर्ट वर्क अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए है, आर्ट वर्क अपनी प्रोग्रेस के लिए है। बिल्कुल जी। तो उसमें ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू फाइंड टैलेंट ऑल्सो, हिडन टैलेंट। हाँ जी, बहुत सारा हिडन टैलेंट है। मेन हमारा वही है अभी, ताकि जो छुपा हुआ है टैलेंट है ना, कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड होता है जी। वो बच्चे रीच नहीं कर पाते फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से। बिल्कुल। तो उनको हम हमारे उन तक हमारी पहुँच हो, हम उनको आगे ऑनलाइन से लेके अभी ये टीवी शो भी लेके आ रहे हैं सर के साथ, सोनू सर के साथ। ओके। तो वहाँ पे भी ओपनली हर एक से ही आर्टिस्ट को हम बुलाएंगे, तो कोई भी आर्टिस्ट है वो वहाँ पे आके अपना आर्ट और टैलेंट शो कर सकता है, ताकि बच्चे को हेल्प हो। स्कॉलरशिप्स हैं अलग अलग टाइप की, तो हमारा बेसिक मोटिव यही है जी। एक सबसे बड़ी बात है सर, जो मैं व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस हियर, अपॉर्चुनिटीज आर गिवन टू ओनली टू फ्यू। कम लोगों को ना मिले, ज़्यादा को मिले। हाँ जी। ये मेरे ख्याल से ये पर्पस होना चाहिए बिल्कुल। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनके अंदर टैलेंट है उनको मौका मिले आने का और काम करने का। हाँ जी। वो काम करना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं मिलता। हाँ जी, यही चीज़ है। नहीं, तो ये मुझे लगता है इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। किसी को काम करने को दे दो और उसकी रोजी रोटी, प्रोग्रेस, स्टेटस, एवरीथिंग शुड बी देयर। तो ये सिर्फ किसी कुछ हाथों में ना जाए, हाँ जी, बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। ये बस यही है मैम। अभी जैसे ये पूरे इंडिया में गाड़ी घूमेगी, ऑल इंडिया से हमारे पास आर्टिस्ट आएंगे, तो वो एक चेन बन जाएगी। अभी सपोज करो हमारा महाराष्ट्र में कोई प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास आर्ट वर्क का, तो वो वहाँ के किसी बच्चे को भी हेल्प हो जाएगी, उसका फाइनेंशियल खर्चा भी चलेगा। हमारे पास हर एक स्टेट का एक रीच होनी चाहिए कि वहाँ पे हमारा बंदा आर्टिस्ट है जो काम कर पाएगा। तो हमारा मोटिव वही है, पहले आर्टिस्टों को रीच करके वहाँ तक उनको सिखाएंगे भी, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, फिर उनको उस कदर तैयार करना। हमने सिलेबस भी वैसे बनाया ताकि बच्चे के काम आए फ्यूचर में भी। ऐसा नहीं है वो मतलब सिर्फ पढ़ी जा रहा है, वो काम नहीं आ रहा है उसके बाद, तो सर्टिफिकेट की कहीं अलग वैल्यू रहती है। जी। तो प्रैक्टिकली ज़्यादा हो। स्किल। हाँ जी, दिस इज स्किल सब्जेक्ट। बिल्कुल। तो काम करना आना चाहिए। हाँ जी, खाली पेपर या डिग्रीज में हाँ जी, नहीं जाना बच्चों को, बिल्कुल। काम करना आना चाहिए, तो उसकी वैल्यू चाहिए मेन। ठीक है। और wherever you need any support, so please do let us know. See, we all are there. करते बच्चों वाला कुछ